ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आपके लिए SBS ओरिजिनल्स। तो आज क्या ओरिजिनल बात हमें आप बताने वाली हैं? ओरिजिनल बात किसके बारे में बताऊं मैं? चलिए मैं कामना से ओरिजिनल बातें निकालता हूं, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि क्या है हमारे पास आज बहुत ही खास। शिवरात्रि के दिन की शुरुआत कोयम्बटूर के ईशा आश्रम में कैसी है, जरा इसका नजारा भी देख लीजिए, जहां SBS के साथ शरद मल्होत्रा पहुंचे हैं। सुबह उठते ही उन्होंने चुने हैं बेलपत्र भगवान शिव की पूजा के लिए, और फिर स्वच्छता का पालन करते हुए वो पहुंच गए हैं उसी जगह जहां सुबह से ही शिव आराधना आरंभ हो चुकी है। शिवरात्रि का जश्न भले रात में होगा, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही शिव पूजा, शिव वंदना और शिव आराधना प्रारंभ हो गई है। आश्रम में घूमते घूमते शरद पहुंच गए हैं गौशाला गायों की सेवा करने, और यहाँ उन्हें मिल गईं सदगुरु जग्गी वासुदेव की बेटी राधे जग्गी, और शरद ने किया उनका इंटरव्यू। उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है शिवरात्रि, क्या है आदि योगी शिव, और क्या होती है पिता पुत्री में बातें। महाशिवरात्रि का महापर्व है एंड who better than you, craziest time of the year. Yes, definitely the craziest time of year for us here at Isha. Okay, and what is Shiva according to you? That is the question I think we all need to know. I don't think We all have our own definitions. हम सबके पास हम सबकी अपनी परिभाषा है, लेकिन शिवा आपके लिए क्या है वो सब जानना चाहते हैं। Simplest form. I'm a Bharatnatyam dancer, so for me Shiva is a dancer. And that doesn't mean he's doing steps all the time, but the whole cosmos is dance in that sense. Okay. So Shiva is that for me. Okay, great. And what is Shivratri? So obviously now Shivratri has gotten bigger. And अब हम सब देखते हैं कि शिवरात्रि जो है हर साल जो है, मेरे लिए पहली बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, and I think every year मैं आने वाला हूँ. Trust me. Please come. Okay, and I'm going to get people out here because this is an experience. I think हम सब जानना चाहते हैं कि ईशा फाउंडेशन जो है यहाँ पे शिवरात्रि का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है। So for us, everything at Isha for us is an expression of, or is a means for us to grow. And so whether we do it by having a celebration like this, or whether we do it by sitting quietly with our eyes closed, everything for us is a means to grow. And in that sense, Mahashivratri is an opportune night where, in the grace of Sadguru and in the grace of Adi Yogi and Dhyanalinga, we have the opportunity to really make use of that and hopefully take a few steps towards our spiritual growth. At the same time, Mahashivratri is a celebration that has happened across India, and it was not so big when we started out many years ago. For whatever reason, the celebration had become small, or it was done in very small village temples, and it was not something that was mainstream. But something so significant and something that is so easy to access by anybody. It's not that you have to come and celebrate with us. Of course, everybody is welcome to come and celebrate with us. But even if you sit by yourself and you keep yourself awake the whole night, and if you do a simple process, it will manifest for anybody. It will amplify. It will amplify for anybody. I think it grew very naturally when we first had Shivaratri in the ashram. I don't know, when you walk around the ashram, you'll see we have a very small ground there, because that was the entire ashram, and there were just maybe 50-60 of us, because only about 20 of us were living here, and they had brought their family. So for us, big Mahashivratri was the 50-60 people sitting around, and one old lady, she used to sing songs, and others, we would go on a walk. When it got kind of difficult, we would go on a walk. So that's how it started, and naturally, as more and more people joined us, they wanted to offer more music, and then volunteers chose to come and dance, and that's really how it started. It was a small celebration for us within the ashram, and slowly, as people heard about it, people started to come. I remember the first time we had 500 people for Mahashivratri. It was massive for us.
how are we going to feed 500 people at night? How are we going to seat them? What are we going to do? And it all just kind of came together. So now Mahashivratri as a celebration is not just a celebration of spiritual growth for us anymore. It's also a means to showcase the art and culture of India. It's not just the classical arts. We have many people who see Shiva as a part of themselves. And that's not limited just to the Indian diaspora anymore. So anybody who wishes to offer, anybody who wishes to celebrate can come and celebrate with us. Obviously, you have had your conversations with Shri Sadguru, your father. I think the world needs to know the little conversation that we've had about Shiva. It's everything to go do with Shiva now. I'm a terrible disciple. I don't ask any questions. I don't ask any questions at all. And it's not because I don't have questions, but I just feel that he has spoken so much. And I've been around him in crucial moments when, say, before the Anlinga consecration was happening, and I've traveled with him my whole life. So it's not so much about what he says as much as who he is and how he is. In every moment that you're with him, whether as a father or as a guru, he never takes any moment casually. And this is something very difficult, I think, even for us. We don't have busy schedules like he does. But, this is happening, you do this half and you do that half. I've never seen him in even one moment be half-hearted about anything. Wow. He's 100% involved with whoever is in front of him. And if nobody is in front of him, he's 100% involved in that. So a little bit of that, if we can grasp, I think that's enough growth. ईशा फाउंडेशन के आश्रम में शरद की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भी हो गई जो शिवरात्रि के जश्न वाली रात दिखाने वाले हैं फायर डांस। तो जरा सुनिए इनसे कि आखिर कौन करेगा, कैसे होगा ये फायर डांस। महाशिवरात्रि का महापर्व और आज हमारे साथ है पारस शर्मा। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था मुझे पता लगा कि ये आज एक बहुत ही कमाल का एक्ट कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। उसके बारे में आप बताएंगे या मैं आई थिंक आप बताएंगे तो बेटर है। सो बेसिकली ये ऐसा एक्ट है कि मतलब महाशिवरात्रि स्टेज पे अराउंड दिस टाइम कोई भी अनप्रोफेशनल नहीं आता। दिस इज द ओनली एक्ट दैट इज डन एब्सोल्युटली बाय all unprofessionals, all unprofessionals, and their driving force, I think, is only devotion. Shiva and devotion and Sadguru. There is, I think, nothing else. And they are working with fire. Some of them have. Hang on. You can't make it look so easy. They are working with fire. Let me tell you. जी आग से खेल रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल आग से खेल रहे हैं वो। और इतनी आसानी से बोल दिया। और वो भी कभी इनमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी स्टेज और कैमरा के सामने भी नहीं आया। सो ये सिर्फ एक ऐसा एक्ट है कि कर सकते हैं यार, क्यों? मतलब जी एक कमाल की चीज़ है कि जो लोग जिन्होंने शायद सीखा भी नहीं है फॉर्म डांस का, और जिन्होंने शायद कभी डांस भी ना किया हो, कभी नहीं, और बिल्कुल मतलब अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल्स, वो आपके साथ मतलब आपने उनको सिखाया है। जी आज महाशिवरात्रि के लिए। और कितने लोग होंगे स्टेज पर? अराउंड 100 तो मिनिमम हो गए स्टेज पे। तो 100 लोग के आसपास। इसमें कितने हफ्तों की मेहनत गई है इसमें जानना चाहते हैं। जी इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं हम। और 1.5 महीने से बहुत चीज़ें होती है, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग इन लोग उठते हैं 4 बजे। इन लोग 4 से 8-9 बजे तक अपनी साधना करते हैं। साधना करने के बाद इन लोग अपने अपने ड्यूटीज़ पे जाते हैं। तो कुछ लोग फार्मिंग की ड्यूटीज़ पे, वॉलंटियरिंग के, कुछ लोग मीडिया की ड्यूटीज़ पे, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें इधर होती है। तो उन लोग वो ड्यूटी पे जाते हैं। फिर अराउंड 11 o'clock उन लोग अपने खाने ब्रंच के लिए जाते हैं। तो मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी डांसिंग के उनका शायद दूर से कोई नाता ना हो, दूर तक। इनमें से कुछ लोगों ने कभी जिंदगी में एक अपना हाथ भी नहीं घुमाया। तो ये आके मुझे उन्होंने आज वो करेंगे, आग से खेलेंगे ऑन स्टेज। जी बिल्कुल। और आपने उनको सिखाया है। जी फायर डांस की बात सुनते ही शरद को भी डांस करने का मन हुआ। तो यहाँ कोरियोग्राफर पारस शर्मा से उन्होंने कुछ स्टेप्स सीखे और फिर पहुंच गए रिहर्सल हॉल में कुछ और डांस के स्टेप्स सीखने के लिए, ताकि शिव के चरणों में भले मंच पर ना सही मगर मोबाइल रील के जरिए अपनी भक्ति दिखा तो पाएंगे।
कोयम्बटूर से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।